4 to 5 days, since our first, I believe it's fifth lecture, we've been covering this the Abbot of Canterbury. So this is a poem by an anonymous poet, and as far as the story of the poem is concerned, we have talked about different like characters in it. Like there's an abbot, there's King John, and the conversation they are having, we talked about that King John comes to know about abbot who is possessing a large amount or great amount of wealth, and he's having 50 plus like servants. He serves 100 men on daily basis. Like he provides them with food and all that. Okay, and he's having 50 servants who are always ready to serve him with while wearing gold chains. And the king comes to know about that, and he calls Abbot to his court, where he asks him to uh, the way he's spending that money, like that wealth. So according to the abbot, that was his true golden year. That is, whatsoever he has owned is his own, and that is faithfully like got it. He has like got that faithfully, okay, faithfully or fair in a fair way, okay. He's not spending somebody else money, somebody else wealth. So that's why the abbot tells the king that I believe and I trust you that I'll not be harmed on the basis of this, because I'm spending my own money, and this should not be considered a crime. And it is, yes, obviously, when you are spending your own money and you have got record of that, the state cannot punish you, okay, because you are paying the taxes and all that. And in case like unfair you have got unfair wealth, like unfairly earned, like in case of, you have seen Nawaz Sharif and all that, the people who are involved in money laundering and all that, so they can be tried, whereas the abbot cannot be tried because he has earned the money, earned the wealth in a fair way, okay. So the king asks him to answer his three questions. Otherwise, if like otherwise he will kill him, like he'll smitten. Smitten is an archaic word that is used for beheading somebody, okay. So beheading is like cutting the head from the body, cutting it off from the body, okay. So the king said that I'll cut your head off your body if you will not answer my questions. There were three questions. The first question was to tell the king his worth, like what was his worth with his crown and his liege man, novel of birth. So the abbot was supposed to tell him uh, the king's worth, what was his worth in that place. The second question was, king asked him to tell him the time he would take to go round about the world, okay. दुनिया का जो चक्कर था वो कितनी देर में वो लगा सकता है, that was the second question. And the third question was regarding like what he was thinking at that time, okay. So the king asked him like, tell me what am I thinking right now. So that was the third question. And on hearing that, the abbot said that these are really difficult questions for me, for a person like me who is not that much intelligent. So then he asked the king to give him some sort of some period, some time, some space. So he asked for 3 weeks. The king, so kind, he was so kind, so he provided him. He told him that okay, I give you 3 weeks space, 3 weeks time. Go and then answer my question. But you need to come back when your time is about to end. Okay. After 3 weeks, you have to be here in my court and you have to answer my questions. So, on hearing that, we
we saw that, like we read that, because we imagined that as well. Like if we are being told a story, we simultaneously make a sketch of that in our mind. So we were just imagining like, okay, so now the abbot is being told the story. So the abbot is now moving towards Oxford, Cambridge, and he asks every scholar, like PhD scholar, whosoever was there in the universities. So he asked them like, what should be the answer of these questions. So according to Abbott, there was nobody who could, like, according to Abbott or according to poet, there was nobody who could answer his questions, or who could devices like make answer to those questions, the three questions that the king asked. So based on that failure, on the failure of not getting the answer to the questions, the abbot moves towards a place. Now let's see where he goes, what he does. We'll start with the next stanza. Hope you've got the full story. Like I have recalled it right now, I revised it right now. So keeping that in your as your background knowledge, we'll move further towards our story. Okay, so we'll start with this like. Okay, so we were done with Away Road the Abbot. So now we'll move towards page number 7. That's first, second, third, fourth, fifth. Okay, fifth stanza on page number 7. You need to move towards that. Come on, guys. If you open your page number 7, fifth stanza. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Then home rode the abbot of comfort so cold. यहाँ पे comfort so cold का मतलब है in, like he was desperate, he was in sorrow. Okay, he was not satisfied. Okay, he was gloomy. Like you can write these words as well. Keep that in your mind. If I'm telling you the meaning of the words, so you need to jot those down. Okay, जितना जल्दी हो सके उनको अपने पास लिख लिया करें, नोट्स बनाते रहें अपने पास, क्योंकि फिर बहुत ही मुश्किल होता है आपके लिए फिर रिवाइज करना ये वो. तो जो चीज़ बताता जाऊँ, rapidly note it down. Okay, or jot it down, whatsoever you call it. Simply write it down. So of comfort so cold. So in a gloomy manner, in a worried manner, he moves towards his home. Okay, like he moves home. Then home rode the abbot of comfort so cold. Comfort so cold से मुराद है कि वो gloomy होके, gloomy यानी कि ये देखिए ना, comfort so cold is like in a gloomy manner. आप यहाँ पे इसकी मीनिंग भी देख सकते हैं. ओके, ये जो नोट्स हैं ये आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इसी वजह से. तो ये यहाँ पे इन नोट्स में देख लीजिएगा, यहीं पे भी लिखा हुआ है कि of comfort so cold is like so poorly comforted. ओके, यहाँ पे है poorly comforted. So इतना वो like comforted की जगह आप यहाँ पे कह सकते हैं कि he was in a worried manner. ठीक है, in a worried manner he moved back home. And he met his shepherd. And he met his shepherd are going to fall. Reading these lines again with rhythm and rhyme. Then home rode the abbot of comfort so cold, and he met his shepherd are going to fold. अब fold यहाँ पे क्या है? Fold is herd of sheep. ठीक है, जो sheep होती हैं उनका एक herd समझते हैं. Fold is, यहाँ पे जो word fold है, that is herd of sheep. ठीक है, ये नोट कर ले अपने पास. And he met his shepherd. अब shepherd कौन होता है? जो चरावा जिसे हम बोलते हैं, the one who take cares of sheep. ठीक है, उनको grazing कराना. grazing समझते हैं? grazing is like घास जो वो चरागाह में चरते हैं. ठीक है, तो वो चरागाहों में जो लेके जाता है उनको घास खिलाता है. So that is shepherd who takes care of sheep. So that is shepherd. तो shepherd कहाँ जा रहा होता है? अगोइंग का मतलब है, ये जो वर्ड है अगोइंग लिखा हुआ है, ये थोड़ा आर्कैइक है. आर्कैइक से मुराद है बहुत ही काफी पहले यूज होता था. ठीक है,
जिस तरह आर्काइव चीजें होती है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं, तो वो कदीमी, ठीक है, बहुत पुराना, पिछले दौर में जो है मिडिल इंग्लिश में ये यूज होता था, अब ये यूज नहीं होता, ठीक है। हो सकता है इनफॉर्मल में कहीं जो है पोइट्री में या इस चीज में कहीं इस्तेमाल हो तो हो, नहीं तो वैसे ये इस्तेमाल नहीं होता। अ गोइंग इज दैट इज गोइंग, ओके, गॉट इट। अ गोइंग टू फोल्ड इज व्हाट, हर्ड ऑफ शीप, तो वो अपनी शीप के पास जा रहा था, तो जो हमारे एबट हैं वो रास्ते में उनसे मिलते हैं। हाउ नाउ माय लॉर्ड एबट, हाउ नाउ माय लॉर्ड एबट, यू आर वेलकम होम, what news, now he says, what news do you bring us from good King John? How now my lord abbot, you are welcome home, what news do you have bring us from good King John? Like he's welcoming him. Welcoming whom? Welcoming King John. Okay? So he welcomes him and he's hopeful, like he will be fine, huh? And then he says, what kind of news? कौन सी खबर लाए? पहले वो सेलफोन वाला तो दौड़ नहीं था कि उन्हें पहले से ही पता चल गया होगा कि भाई ये जो ना एबर्ट के साथ ये हो गया, कि दिस इज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, तो यहाँ पे अगर कुछ भी हो जाए एक सिरे में दुनिया के में, तो वो हमें जल्दी से ही हमें पता चल जाता है। तो दैट वाज द एज, लाइक नॉन टेक्निकल एज, आई वुड से देयर वाज नो टेक्नोलॉजी लाइक वी हैव, वायरलेस टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, सेल फोन्स, इंटरनेट। सो यहाँ पे उसे पता नहीं है कि लाइक एबट के साथ क्या हुआ, whatsoever happened with him. So that's why his shepherd asks him, what happened? What kind of news have you brought from King John? Now, the abbot replies, sad news, shepherd, I must give. Sad news, shepherd, I must give, that I have but 3 days more to live. That I have 3 days more to live. For I do not answer him questions 3. For I do not answer him questions 3. My head will be smitten from my body. आ रही बात समझ में? So, sad news, shepherd, I must care, that I have but 3 days more to live. For I do not answer him questions 3. My head will be smitten from my body. क्या कह रहा है? Sad news, बड़ी अफसोस की खबर, दुखी खबर। Shepherd, मैं बताता हूं तुम्हें, I must share it with you. मेरे पास सिर्फ 3 दिन है जिंदा रहने, सिर्फ 3। इसके बाद अगर मैंने उसके 3 क्वेश्चंस का जवाब नहीं दिया, for if I do not answer him questions 3, देखें सिंटैक्टिकली ये सेंटेंस आपको ठीक नहीं लगेगा, लेकिन पोएट्री में ये चीज चलती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ग्रामेटिकली इल, बट इन पोएट्री दैट्स ओके। तो ये लैंग्वेज के वो कॉन्स्ट्रेंट्स, फॉर्मल जो भी स्ट्रक्चर है उसको फॉलो नहीं करता। यहाँ पे क्या मेंटेन करना था, यहाँ पर वो अपनी जो रिदम है उसको मेंटेन करना था। फॉर आई डू नॉट आंसर हिम क्वेश्चंस 3, माय हेड विल बी स्मिटन फ्रॉम माय बॉडी। 3 बॉडी, ई दैट इज राइम, ठीक है, राइम स्कीम को मेंटेन करना है। दैट्स व्हाई उन्होंने क्या कर दिया, वो अपने हिसाब से स्ट्रक्चर्स पुट कर दिए, बस वो साउंड्स की मैचिंग होती है पोएट्री में, ठीक है, ये चीज आपने समझ लेनी है। तो जब भी फॉर्मल राइटिंग करनी है तो उसमें आपने इन कॉन्स्टेंट्स का, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स का, इन पे ध्यान देना है आपने, सही है। ग्रामेटिकली इल ना हो सेंटेंस आपका, सिंटैक्टिकली इल ना हो। यहाँ पे सिंटैक्टिकली भले इल हो, सिमेंटिकली इल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि सेंस दे, कि हमें ये सेंस यहाँ से मिल रहा है। फॉर आई डू नॉट आंसर हिम क्वेश्चंस 3, 3 सवालात का जवाब नहीं दूंगा। माय हेड विल बी स्मिटन फ्रॉम माय बॉडी, मेरा सर जो है वो धड़ से
अलग कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा. Now, similarly, he starts with the next stanza, like he is now about to tell him the questions that the king asked him. The first is to tell him there in that state. The first is to tell him there in that state, with his crown of gold so fair on his head, among all his liege men so noble of birth, to within one penny of what he is worth. उसने क्या बोला? The first is to tell him there in that state. State में, उस place में. Like हमने पहले भी बात की, वो जो place थी, कौन सी place थी? His throne. His status. He is a king. He has got his companions, his servants, his courtiers, जो उसकी सर्विस में बैठे हुए हैं. उसके पास एक सोने का ताज है. एक सोने के ताज से मुराद है कि he is a king. वो वहां का बादशाह है. तो जिस जगह पे वो बैठा हुआ है उस वक्त, उसे बताना है कि उसकी बर्थ कितनी, उसकी हैसियत क्या है. The second, to tell him without any doubt. The second, to tell him without any doubt how soon he may ride this whole world about. देखें किस तरह प्यारी लाइंस बनाई हुई हैं उसने. क्यों? देखें, first line doubt, second line bout, t आ रहा है ना, वो राइम स्कीम उसकी आ रही है. t वो भी t पे एंड हो रहा है. The second, to tell him without any doubt how soon he may ride this whole world about. तो सुनने में भी अच्छा लगता है कि सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है कि उसे बताना है, ठीक है, विदाउट एनी डाउट, बगैर किसी शक शोबे के, एग्जैक्टली यानी कि बताना है कि कितना जल्दी वो दुनिया का गोल चक्कर लगा लेगा. राइड द होल वर्ल्ड अबाउट. गोल दुनिया का घूमना है, चक्कर लगाना है. कितनी देर में लगाएगा, कितना जल्दी लगाएगा, ये उसने बताया. And at the third question, I must not shrink. तीसरे क्वेश्चन पे मैंने shrink नहीं करना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है. बताना क्या है? To tell him there truly what he does think. सच्ची सच्ची बताना. क्या बताना है कि उस वक्त वो क्या सोचे. फर्स्ट क्वेश्चन, उसकी बर्थ क्या है, किंग की, किंग जॉन की. सेकंड क्वेश्चन, कितना जल्दी वो दुनिया का गोल चक्कर लगा लेगा. सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उस वक्त वो क्या सोच रहा है. जब आप एबट उसके सामने जाएगा, जिस वक्त वो कह रहा कि उस वक्त मैं क्या सोच रहा हूं. Like at the time we saw that Abbot was in front of him and he said that answer my third question, and that is what am I thinking right now. इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ. जाहिर सी बात है, उसको 3 हफ्ते का टाइम दिया गया. तो अब जब 3 हफ्ते बाद आएगा वो, तो उस वक्त बताएगा कि उस वक्त वो किंग क्या सोच रहा होगा. सही है. तो हाउ अनफेयर दैट इज. यही चीज तो वो बता रहा है. Now let's see what happens. Now cheer up. कौन कह रहा है? शेफर्ड. ओके, अब यहां पे शेफर्ड बात कर रहे हैं. शेफर्ड कह रहा है, Now cheer up, Sir Abbot. खुश हो जा, आप खुश हो जाए. Cheer up, Sir Abbot. Did you never hear yet? Did you never hear yet? क्या अभी तक आपने नहीं सुना? Cheer up, खुश हो जाए. Be happy. There's nothing to worry about. There is nothing to be worried about. Chill. That a fool he may learn a wise man with.
lend me horse and serving man and your apparel. जो apparel like ऊपर पहना जाता है, like that is a kind of coat, apron. And I'll write to London to answer your query. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? Now he says, sure. Be happy, sir. क्या आपने नहीं सुना? That a fool he may learn, a wise man with. How can a fool teach a wise man? Lend me horse. Provide me your horse. Provide me your horse. Lend is like किसी को उधारा देना, ओके? ये वो उधारा मांग रहा है कि मुझे लैंड कर दे, ठीक है? And serving man and your apparel. अपने जो serving man, वो जो 50 gold chains के साथ थे, वो वाले 50 man, वो serving man भी दे दे मुझे, अपना apparel भी दे दे, अपनी पोशाक दे दे, अपनी ड्रेसिंग दे दे मुझे. And I'll write to London town to answer your prayer. मैं जाऊंगा. ये जो मसला हुआ है, ये जो आर्ग्यूमेंट हुआ है, ये जो क्वेश्चंस हुए हैं, इनका आंसर करने मैं जाऊंगा. वैसे क्वारल इज लाइक झगड़ा, लेकिन यहाँ पे क्वारल इज लाइक काइंड ऑफ पजल, जो आपको एक चैलेंज दिया गया है. तो उस चैलेंज को फेस करने के लिए मैं जाऊंगा लंदन का, लेकिन उसके लिए आपको मुझे अपने सर्विसमैन देने पड़ेंगे, अपना हॉर्स देना पड़ेगा, एंड सिमिलरली योर एप्रन, योर ड्रेसिंग, ताकि मैं एबट तो लगूं उसके सामने जब जाऊं. So that's why he asked him all these things. So let's see, this would be the last stanza we'll cover. Nay, frown not, if I have been told up to me. I'm like your lordship as ever may be. Now, गुस्सा नहीं करना. Frown, anger. Like simply you can write down, don't get angry. Don't get angry. गुस्सा नहीं करना, क्योंकि जिस वक्त मैंने ये चीजें पहन ली तो I look like you. Though I'm your servant, but जब आप मुझे ये चीजें प्रोवाइड करेंगे तो I look like you. और जब आपकी तरह दिखूंगा तो प्लीज frown. नहीं, frown not. नहीं, गुस्सा नहीं करना. And if you will but lend me your gown, there is none shall know us at Fairland town. आप मुझे जो भी चीज प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस में I will look like you. And if you will provide that gown to me as well, like he's wearing his uniform as well as a gown upon that. ठीक है, उसने एक गाउन भी पहना हुआ है अलग से अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर, लाइक अपने ड्रेस के ऊपर. तो कह रहे हैं कि अगर आप अपना गाउन भी मुझे देंगे तो वहां पे कोर्ट में, लाइक ही इज सेइंग लंदन टाउन, लाइक फेयर लंदन टाउन, nobody will be able to recognize us. Nobody will be able to distinguish like you and me. There'll be nobody कि कौन एबट है और कौन शेफर्ड है. हमारे बीच में डिस्टिंग्विश कोई नहीं कर पाए. मैं एबट की तरह दिखूंगा. The horses and serving man thou shalt have. Shall have. You will have. Okay, shall have.
Now horses and serving दिए भाई, हॉर्स भी दिए, सर्विंग मैन भी दिए, जो चाहिए ले जाओ. With sumptuous array, sumptuous, यहाँ पे word है sumptuous, 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 rich, richly लिखते हैं, or highly. Array is what? Decorated. या फिर लिख दें ornamented भी लिख दें. Okay, with sumptuous array, most gallant and brave. Gallant, a gallant soldier. Bahadur. Sumptuous, richly decorated. वो जो richly decorated हैं, like horses, और उसके साथ जो serving man है मेरे, जो बहुत ही बहादुर हैं, gallant हैं, brave हैं, वो भी मैं तुम्हें provide कर रहा हूँ. With crozier. अब crozier क्या है? वो जो staff होता है. Staff यानी कि वो डंडी नहीं होती जो father के हाथ में रहती है, priest के पास रहती है. We have been told I've got 2 minutes, okay? So let's cover it, okay? With crozier. Crozier उसके पास जो staff होता है, लेकिन ये आम staff नहीं है, डंडी नहीं है. ये भी ornamented होती है. उसमें वो मोती जवाहरात डायमंड चायमंड लगे हुए होते हैं, ठीक है? बड़ा ही खूबसूरत लगता है डंडा, प्रीस्ट के हाथ में होता है. सही है? तो mithra, like with crozier and mithra and brochet and cope. Brochet and cope. Like mithra is a kind of hat, tall hat. अगर search कर लीजिएगा, so that Abbot wears, like puts on his head. ठीक है? Now brochet is like a dress, a gown, not a gown, but in simple words, it's like our coat. ठीक है? तो जो फिटिंग में our coat है, वो kind of ये होता है, और जो कोप है वो एक गाउन की तरह होता है. ठीक है? ये जो कोप है ये गाउन की तरह होता है, ये बिल्कुल ही ऊपर पहना जाता है. Fit to appear for our father the Pope. Now हमने क्या पढ़ा कि तुम्हें I'm providing you the horses. डिमांड की ना शेफर्ड ने कि क्या क्या प्रोवाइड करना है? Horses, serving man, and your dressing. ये सब चीजें मुझे प्रोवाइड करो. एबट ने क्या कहा? Yes, you get all these. Take my hat, take my uniform, take my dress, take my staff with you. Staff is like the STAFF. That is the people who are working in an office, okay? And STAFF is also used as a kind of डंडी के लिए, ठीक है? जो भी like a commander is holding, तो उसे स्टाफ कहा जाता है. जिस तरह हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होती है, SSPs के पास होती है, that is a kind of staff. ठीक है? लेकिन वो छड़ी जो है वो थोड़ी सी लंबी होती है, जो पोप के पास होती है, जाहिर सी बात है, प्रीस्ट के पास होती है. So similarly, he says you will get everything, and now go and answer the question. That's all. That was simply what they were talking about, and they say like the abbot said in the end that I can swear like you will look like me, okay? And because I'm providing you with everything, so there will be no any kind of chance that would get you like you are not the abbot, you are a shepherd. Okay, thank you so much. Hope you have got the gist of these stanzas, and we will try to cover or finalize our poem, our song in next session. Thank you so much. If you're having any question, let me check out.
No questions?